Yes, we are back, and I think now you can see the screen. So, welcome back after the strong Budh Purnima yesterday. Hope everybody enjoyed the full moon. So, starting with a new topic on pediatric endodontics. So, as routinely we get a lot of cases of general routine adult dentistry, we also have a lot of cases for the pediatric cases, especially the molars. Especially the molars, as can you see the screen, guys, so that I can start the session? I'm just checking on my phone. So today would be a strong topic. So today, as pediatric endodontics is a very common clinical cases. According to the clinical cases, a lot of cases come, and usually from the restorative normal JC filling to a good pulpectomy followed by stainless steel crown are the common routine procedures. So So today we'll just make a base of our sessions. That is, so today we'll just make base of a session of pediatric endodontics. I know everybody is very eager. Everybody is very eager to listen about the basically the pulpectomy procedures. But before starting with the pulpectomy procedures, I would like to discuss few basics in which what to do, when to do, starting from a normal GIC restoration to a good pulpectomy to a good stainless steel crown. So, first of all, I'll just like to introduce few things. Ki our main motive in pediatric endodontics is to save the tooth. Why to save the tooth? To prevent any future malocclusion, and very important, to retain the space for the permanent teeth. So as we all know, the milk teeth or the deciduous teeth are basically the guides for the permanent teeth to erupt. तो इसलिए ये सारी चीज है. But before that, I'll be just introducing pediatric dentistry a little. So what to expect from the sessions? Pulp therapies, long lasting restoration, especially the stainless steel crowns. So always there has been a question what to do in a pediatric tooth, whether to fill it just with the ART, atraumatic restorative technique with the GIC, or go for a pulp capping if there is a mild pulpal exposure or leaving the caries, or go with a good pulpotomy procedure, or we may have to go for pulpectomy procedure. There is a very small, thin, basic line between the, I'll say, vital pulp therapies and the non-vital pulp therapies. So I've broadly classified pulp capping and pulpotomy into vital pulp therapies and the non-vital pulp therapies, that is the pulpectomy procedure. So a very fine line is there relating to the patient symptoms, which will help us to plan a treatment in our pediatric patients. And very important, one more, what I've felt in clinical practice is the main problem with pediatric dentistry is the longevity of the filling. Either you go with a GIC composite, the longevity is always a question mark. So maybe you must have done very good pulpotomy, pulpectomy procedure, but if the restorative material is not done, restoration is not done nicely, or a good seal is not there, the treatment tend to fail. Okay, are you with me, guys? Do you agree with me? Whatever the procedure we do,
pediatric patients, the main problem which we face at the end is retainability of a restorative material, and most commonly failure of our any pulp therapy. We do a class 2 filling, it tends to go for a pulpectomy. We go for a pulpotomy, it tends to go for a pulpectomy, or it becomes calcified. But a lot of failures have been seen clinically. So today we'll be just discussing the basics, in which we'll be telling few criteria in which you can select what type of therapy, and along with the advanced pulpectomy procedures which are now followed in a routine practice to do a good pediatric endodontic procedure of pulpectomy using good, smart, smaller size rotary files. So earlier, if I go few years back, we didn't have rotary files for pediatric patients. So that procedure using hand files was very I'll say, because the kids cannot open the mouth for long, so we couldn't do good preparation of the canals. So followed by the obturation with the resorbable material was also not good. So now with the good advancement of very good pediatric rotary files which of smaller size, the procedures have become more simpler. Okay. So this is a brief introduction, and very very important is when to crown and which crown. तो हम लोगों को ये तो पता है कि अपना रिस्टोरेशन टिकता नहीं है, और स्टेनलेस स्टील क्राउन वी हैव बीन टॉट इन आवर ग्रेजुएशन डेज एंड सम पोस्ट ग्रेजुएट्स आल्सो, कि वी नीड टू गिव अ क्राउन इन मोस्ट द pediatric patients, especially when there is a large restoration has to be done, because the fillings don't stay, but stainless steel crowns are a very strong restorative material in this type of patients, and very easy to give also if we follow a few guidelines. And we don't have to take any impression, we just have prefabricated SS crowns and we just cement it by crimping the margins and selecting the right size. So do you feel, guys, the criteria which I am discussing with you is worth discussing, as these are the common scenarios which we face in a clinical practice? The failures, the longevity of the restorative material. If yes, just write why in the text box so that I can proceed, because the main agenda of this topic is more into the clinical criteria for doing vital pulp therapies, non-vital pulp therapies, and discussing advanced procedures of pediatric endodontics using the special files which have come, and followed by basics of a long-lasting restoration, especially in case of pediatric patients. Really, guys, I want yes in that comment box so that I can proceed with the next slides. Okay, and guys, I tell you, these pediatric patients will, if do good treatment, they will get their full family clinic. So because most of the practitioners or the retreatments which come from pediatric patients, the common excuse is कि बच्चों में ट्रीटमेंट नहीं चलता है. If you do a good treatment और आपका ट्रीटमेंट चलता है in terms compared to the other people who say नहीं चलता है, तो this will make a big difference in your practice. So if you start with a child in a family, bring all of his family members to your clinic. So pediatric dentistry is important, not in terms of treating the child, but also getting a good patient flow through the kit. Next. So as we all know, procedures, most of us know basic procedures, but I'll be just saying few advanced also in the further sessions. But before that, I would like to introduce a few things. Practicing a private clinic, especially a private clinic, management of the child or the kid is an art itself, because
human felt when we manage this type of kids, the most important is to make him familiarize with the environment so that he sits in the chair and opens his mouth, which is the most important step before starting a procedure. If he is familiar, if he has a good connect with you, or he believes that you are a good friend of his, that is how you start, how you connect with the patient when the patient comes to our clinic. Lot of things are there. अगर वो बैटल आपने जीत लिया, बच्चे के साथ कनेक्ट बना लिया, then and also now the pediatric dentistry is an era of nitrous oxide inhalation. Many of the pediatrics use this along with hypnosis techniques. So hypnosis techniques kids patients में और especially anxious patients में works wonders. And nitrous oxidation, I'll say, if you want to practice in a, if you have a lot of pediatric patients and you want to practice exclusive pediatrics, or you want to make your name in terms of pediatric dentistry for your clinic, at least a part, or you buy a chair, then guys go for nitrous oxide inhalation. So this will make you one step ahead of other people practicing in clinical dentistry in terms of pediatric, because you have nitrous oxide. It will make you rare of the rare test. Okay? Hypnosis techniques also, many of the mentors teaches how we can through some words and through eye contact and through other environmental changes, how we can do these hypnosis techniques and help or do the routine procedures which we want to do. ठीक है? और जैसे मैंने बोला था ना कि rubber dam, if you are able to give a good anesthesia and able to place a rubber dam on a pediatric child, that is the best. Why? Because now after placing the clamp, most probably he will not be able to close his mouth, and you keep on motivating him or कुछ भी alternative technique से आप apply करोगे, you can do a complete procedure. I like to add one more slide is you can add other procedures also. तो ये सारा एरा मैंने ब्रीफ आपको बताया कि चाइल्ड्स को मैनेज करना है, नाइट्रस यूज कर सकते हो इफ यू वांट टू प्रैक्टिस एक्सक्लूसिव और बी वन स्टेप अहेड ऑफ योर other practitioners at your place, and so you can learn hypnosis techniques, especially pediatrics. So if you master in managing a pediatric patient, you won the battle by 50%, guys. 50% आपको अगर किसी किड पे काम है तो you just be good in managing such patients. Okay, it takes time, it needs a lot of patience, and not only single, it may require 2-3 visit to basically familiarize the kid to your environment and start a procedure. Until it's an emergency, it's always better to have a good conversation, be a friend of child, and then start the procedure rather than just बच्चा आया सीधे चेयर पे बिठाया and then he is not willing for the treatment. Okay, so make comfortable. Okay, make him aware of all the equipment in his I'll say in his wordings. So the rest 50% which left is your treatment planning, that is correct treatment plan, and your clinical skills to do the procedure. So guys, do you feel that next I'm telling, if you learn these advanced procedures like hypnosis, nitrous oxide, and management of the child, would you be able to do such pediatric patients? And I'll be more focused on the rest 50% of treatment planning and skills, and I will leave the 50% of managing the child because it's a different topic itself. If you guys insist or you want to do, then I'll go into more detailed part of the first 50%. But today, our sessions, 2-3 sessions which are there in pediatric endodontics, is more focused on 50%. That is treatment planning and the skills. Okay, Dr. Satish says, please help us include how to manage pedo patients is most important. Yeah, I will add managing pedo patients today. I'll just, because I'm today more focused on pediatric basics, that is vital
therapies. Okay, I feel so. If others also want to let you know two basic techniques which I follow to my patients, I'll not say I'm perfect, but I manage most of my pediatric patients by following very few simple protocols and also gathering a lot of knowledge from other good pediatricians all around the, I'll say, India and few worldwide. तो उनसे कुछ ना कुछ we learn or we gather information which we apply in your practice and apply in my practice, that I'll be telling you guys. ठीक है, तो मैं बता दूंगा, बस एक ग्लिम्स मैं आपको देना चाहता हूँ. फर्स्टली इज टू मेक गुड कनेक्शन विद योर पीडियाट्रिक पेशेंट्स, दो वो अडल्ट भी इंपॉर्टेंट है बट एडल्ट्स आर मोर कोऑपरेटिव. पीडियाट्रिक वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट 50%, आपको नेक्स्ट 50% अगर आता है तो फर्स्ट 50% आपने काउंटर कर लिया तो इट्स वेरी इजी टू परफॉर्म. आई विल बी टेलिंग गाइस. आज अपना फोकस सेशन पे उसको कंप्लीट करते हैं. नाउ आई नो people are interested in knowing this first 50%. I'll be telling in further sessions. Great. So starting with the basics of pediatric endodontics. ठीक है, हम पल्प थेरेपीज पे आएंगे. And those guys who are connected with me with the sessions, we also spoke about pulp therapies in young permanent teeth. Do you remember? Type yes if you remember. We spoke about a lot of pulp therapies in young permanent teeth when uh, we were in the sessions of traumatic injuries. We wrote pulp capping, especially the, I'll say, direct pulp capping, followed by pulpotomy, switch pulpotomy. We studied, that is the partial pulpotomy and the complete pulpotomy. There is a small difference. Yeah, there is a small difference in terms of pulpotomy in a primary teeth and a permanent teeth. What is the difference? Ki techniques are a lot similar, the steps which we follow are a lot similar, but how the pulp responds difference. तो बेसिकली क्या है कि आप जो प्रोसीजर करोगे लगभग सिमिलर है. ठीक है, मटेरियल स्पेसिफिकली बच्चों में कुछ स्पेसिफिक है पहली चीज, और हाउ द पल्प रिस्पॉन्ड्स टू दिस पल्प थेरेपी इज डिफरेंट इन यंग परमानेंट टीथ एंड प्राइमरी टीथ. तो यंग परमानेंट टीथ वी यूज्ड टू डू पल्प थेरेपीज जस्ट with our one motive for the formation of the image. ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है. बच्चों में पल्प थेरेपीज क्यों करते हैं? बच्चों में पल्प थेरेपी इसलिए करते हैं क्योंकि we know the symptoms are not towards I'll say non-vital treatment. We can maintain the vitality of the tooth and we treat it. ठीक है, तो बड़ों में it's mainly lead root formation. बच्चों में it is a part of routine procedure. Because in adults, if the root formation is complete, I'll not recommend you to do any therapy procedures. Because in long run, if something happens, it will be very difficult to treat such type of cases. अगर आप अपने routine practice में देखते हो, lot of patients come with carotid canals. ठीक है, it is not only trauma, but also sometimes we go for a young patient's pulp therapy where the root formation is complete and the pulp chambers to shrink. तो उनमें थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, इसमें अलग कॉन्सेप्ट है. इसमें इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट. ठीक है, ओके. एंड मेन फोकस, मेन एजेंडा इज जस्ट टू फॉलो बेसिक्स. ठीक है, तो विल बी स्टार्टिंग विद द बेसिक पल्प थेरेपीज. It will you will feel like you have come again to your final year of the pediatric dentistry, and I'll be focusing on this vital pulp therapies. The reason is a lot of patients which we do in which we are in doubt whether do a pulpectomy, pulpotomy, or just a restorative technique. This will be cleared क्योंकि बेसिक से स्टार्ट करेंगे देन लेवल पे आएंगे. तो इसमें सिंपल सा लॉजिक है. आईपीसी, दैट इज इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग. इट इज अ procedure in which patient does not have any symptoms like night or cold sensitivity is okay, no sensitivity to hot.
मतलब पल्पल के कोई इरिवर्सिबल चेंज नहीं है, पल्पल के रिवर्सिबल सिम्टम्स हैं या फिर सिम्टम जो पेशेंट दे रहा है, जो कह रहा है, या फिर सिम्टम्स, then we can go with IPC. Why? Especially a patient comes with a large caries lesion, and when while removing the caries, you may feel you may expose the pulp. Okay, so now you want to expose the pulp, you will put a medicament on the floor and then you will do restorative procedure. ठीक है, तो इनडायरेक्ट पल्प वो प्रोसीजर जिसमें पेशेंट को सिम्टम्स नहीं है, पल्प और पल्प में भी अगर आपने लिखा है पल्प और पेरीरेडिकुलर चेंजेस भी नहीं है, जस्ट आई विल शो यू रेडियोग्राफ. ठीक है, in such type of cases, for example this tooth cup, we are very close to the pulp, so we leave a small carious part and seal it with a restorative material. I'll tell you the materials which we use, and then we can have a follow up. Funda ye hai ki if you follow all the protocols of isolation and you leave a little of caries also, if the patient is asymptomatic, then क्या होता है वो caries seal, मतलब कि जो बैक्टीरियाज हैं, जो भी बैक्टीरियाज वायबल बैक्टीरियाज हैं फ्लोर पे of the decay part, a little, not bulky, they will be get sealed. जब वो सील हो जाएंगे रिस्टोरेटिव मटेरियल से, तो they won't be effective enough to decay the tooth. ठीक है, तो इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है, when your it should be free from dentino-enamel junction. The carious portion should be completely on the dentine part. ऐसा नहीं है वो बॉर्डर है, बॉर्डर से caries निकालने का है. That's why I always tell whenever you excavate a caries, all that from periphery, very important. Always excavate the caries from periphery, guys. Periphery से excavate करो, और जैसे जैसे आप सेट पे आओगे, you will come close to the pulp, and then if you feel the pulp may get exposed, just leave it and seal it. And ऐसा नहीं है कि बॉर्डर्स पे भी caries छोड़ दोगे. अगर आप बॉर्डर्स पे 100% वो एक्सटेंड करेगा. आप एंटर वाले एरिया पे away from the dentino-enamel, at least 1 to 2 millimeter away, then you can leave the caries. And only if the tooth is asymptomatic and there is no periapical changes. ठीक है, so this is the basic criteria. Or what I'll say कि deepest layer of the caries dentine is covered with biocompatible material. तो बहुत सारे टेक्निक्स बताए हैं लोगों ने, बहुत सारे फॉलो कर रहे हैं, and the best part is that in that's what I was telling, हमारे young adult patients और pediatric patients, that is प्राइमरी टीथ वाले में प्रोसीजर दोनों में ये करते हैं, मगर रिस्पॉन्स जो इसका दैट इज इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग का बच्चों में अच्छा है, बच्चों में इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं. सो यू कैन सी द सक्सेस रेट्स आर हायर, दैट इज 90% ऑफ केसेस सक्सेस हैं इफ वी गिव अ प्रॉपर लीकेज फिल्ट्रेशन टू बी प्लेस्ड. तो अगर हम अच्छी सी रिस्टोरेशन देते हैं जिसमें यहाँ से अच्छे से सील है, एंड यू लीव अ लिटिल अमाउंट ऑफ सिम्प्टोमेटिक टीथ, नो हार्म, द सक्सेस रेट इज गुड. फर्स्ट क्राइटेरिया वेरी बेसिक. तो रेट ऑफ ट्रीटमेंट यही है कि हमें जो बैक्टीरिया है भी गए हैं, दे वोंट गेट एनी न्यूट्रिशन एंड दे विल बी सील्ड एंड द caries won't progress, and you can close with a permanent restorative mill that should be leakage free. Okay, so a lot of materials have been used, but common अब materials बहुत सारे हैं, MTA है, calcium hydroxide modified GIC है, dentine bonding agent and other bioactive materials. So what I'll say for a normal clinical practice, very simple protocol I'll tell you. ऐसा केस आया आपने, जैसे मैंने आपको, आपने क्या करा, केरीज एक्सकेवेट करा पहले मार्जिन से, फिर धीरे धीरे सेंटर पे आए और आपने फॉर एग्जांपल केरीज छोटा, जैसे केरीज छोड़ा, आइसोलेट द टूथ. ठीक है, अगर आप कॉम्पोजिट कर रहे हो तो फ्री में एच करो. ठीक है, कॉम्पोजिट नहीं कर तो अगर जीएसी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, रेजिन मॉडिफाइड जीएसी इज अ गुड सॉल्यूशन. एंड देन फर्स्ट बिफोर मटेरियल गाइस, डू क्लोरीन रिंस, वेरी इंपॉर्टेंट.
से उस कैविटी को वॉश कर दोगे, एज आई टोल्ड इन माय सम अर्लियर सेशंस आल्सो, इट हेल्प्स एक्टिवेट लॉट ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटीज इन द कैरियस लेशंस. तो अच्छे से कैविटी डिसइंफेक्ट हो जाए, एंड देन डू अ रिस्टोरेटिव मटेरियल. यू फॉलो विद अ गुड जीआईसी आल्सो. क्लोरहेक्सिडिन से वॉश करा, गुड जीआईसी गुड इनफ. अगर आपको हाई फाई डेंटिस्ट्री करना है, यू कैन गो विद एमटीए आल्सो, और यू कैन पुट, आई से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जाता है डिफरेंट डाइकैल या फिर थेराकैल वाला, दैट इज फास्ट सेटिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम प्लेस करके भी छोड़ सकते हैं. बट रूटीनली व्हाट वी कैन डू, एज आई टोल्ड यू, you wash the cavity, then you can put calcium hydroxide followed by GAC, which we do routine, or you can just wash with chlorhexidine and do dye with resin modified GAC also. This is a common procedure. So is it fine, guys? What I was trying to tell you to do in this indirect capping procedure, especially in pediatric patients, the pulpal response is good, very important. Adults में अलग है, पर pediatric में अच्छा है. So you can follow these protocols of removing the caries. And what I say, periphery से आप remove करो भर से, और जब deep dentine में कर रहे हो तो use a good sharp spoon excavator. Add good sharp spoon excavator to your armamentarium. So you got what I'm trying to say you, so that I can proceed with the next pulp therapy, vital pulp therapy. Say okay. So I'll proceed to the next slide. I'm waiting. Okay. You want me to repeat the process? Okay. तो बेसिकली मैंने ये बोला कि जब भी कोई किड आता है, लार्ज डीप कैरियस लेजन, बट सिम्टम्स नहीं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द इन सिनेरियो आर अवेयर कि अगर ब्लैक दिखा दांत में, डॉक्टर के पास जाने का है. तो ऐसा कोई बच्चा है जो नहीं है, मतलब नहीं हुआ, हल्का फुल्का ठंडा लगना है, देयर इज अ लिटिल कोल्ड सेंसिटिविटी, एंड यू सी अ लार्ज डीप लेजन. You just start with a good round burr. Start from the periphery. Periphery से आप start करेंगे, caries remove करेंगे. In the deeper parts also you can use a round burr, and also you can use a sharp spoon excavator. तो periphery से जब आप caries remove करोगे, तो जब आप center पे कर रहे हो and you are close to the pulp, you can stop. Don't remove completely the caries. Just wash with chlorhexidine. Put calcium hydroxide, Theracal. I'll say Theracal is right cure, and followed by a good GIC composite, whatever you want. Results are good. 90% success rate गई है. So I guess now it must be clear. So moving into the factor. अब ज्यादातर क्या होता है, अगर हम बहुत कॉशियसली अपना स्पून एक्सकेवेटर यूज कर रहे हैं, तो इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग पे वी कैन फॉलो. मगर इफ समटाइम्स क्या होता है, ये तो पेशेंट आया, आप कैरीज रिमूव कर रहे हो और एक पिन पॉइंट एक्सपोजर हो गया, ठीक है, इधर मैकेनिकली और एक्सीडेंटली मतलब ट्रॉमा को, और वो बच्चा आया आपके पास, ठीक है, और एक्सीडेंटली यूजुअली ड्यूरिंग द ऑपरेटिव प्रोसीजर. तो व्हाट टू डू? तो क्राइटेरिया जैसे मैंने जो भी हम वाइटल पल्प थेरेपी कर रहे हैं, उसमें द किड शुड बी एसिम्प्टोमेटिक, एक्सपोजर साइट शुड बी पिन पॉइंट, मतलब स्मॉल होना चाहिए, and free of oral contaminants. Why? Because if the serious goes, then obviously the treatment would differ. तो इसलिए अगर आप बच्चों में भी टाइम यूज कर रहे हो, इट्स गुड, और नहीं कर रहे तो बी श्योर इनफ कि ओरल सलाइवा कंटामिनेशन ना हो, पिन पॉइंट एक्सपोजर. जैसे आप एडल्ट्स में भी सेम फंडा है कि आप जब केरीज रिमूव कर रहे हो, एक्सपोजर हो गया, उसका कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए सलाइवा से या एनी अदर केमिकल. अगर वो नहीं होता है, then and the patient is asymptomatic obviously, because most of the cases we will not do under LA, and few cases we will do under LA depending upon the sensitivity of the patient.
ठीक है, तो इसमें फंडा क्या है, वाई थिंकिंग ऑफ डूइंग अ डायरेक्ट पल्प कैपिंग? पहली बात तो पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक था, और दूसरी चीज हमारा एक्सीडेंटल एक्सपोजर हुआ कॉमनली। तो होता क्या है कि जो पल्प का रिस्पॉन्स होता है ना, इट हैज अ टेंडेंसी टू फॉर्म अ टर्शियरी डेंटिन एट द एक्सपोजर साइट। तो अपना मोटिव यही है कि द पल्प आपका रिपेयर होगा इन मेकिंग अ टर्शियरी डेंटिन when we follow the basic steps of this. तो ये rationale है why we go for this treatment, and success rate I'll say is not that high in teeth, but हाँ recent studies, recent articles आए हैं उनमें 90% सक्सेस रेट दिखाया गया है। तो what I'll say कि as most of the studies earlier which was done, the practice of rubber dam be that strong. So now the studies are occurring, the isolation is much more important. So what say relating to the present scenario, you can go with the direct pulp capping procedure with the rate following all the protocols of isolation and the steps what I'll be telling you. कुछ क्राइटेरिया मैं आपको बताता हूँ। जैसे you can see this is a large caries, so you are removing the caries and there was a light exposure, for example mesial pulpon। तो एक्सपोजर हुआ पेशेंट को सिम्टम से, और एक्सपोजर होने के बाद कैविटी को आइसोलेटेड रखा, और आपने आइसोलेटेड रख के देखा जैसे वो एक्सपोजर हुआ इट डिडंट ब्लीड, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपोजर हुआ प्राइमरी टीथ में और वो ऊज आउट कर रहा है, तो दैट मींस द पल्प इज इन्फ्लेम, वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। और वो पिन पॉइंट एक्सपोजर हुआ और वो ऊज आउट नहीं कर रहा है, by keeping a normal cotton, for example the oozing out is reduced, is also important criteria। जैसे आपका एक्सपोजर फॉर एग्जांपल थोड़ा, और आपने एक नॉर्मल स्टेराइल कॉटन उस पर पैक करके रखी और ब्लीडिंग फिर से नहीं हुई हटाने के बाद, तो मतलब द पल्प इज नॉट दैट इन्फ्लेम्ड, मतलब रिवर्स चेंजेस हैं, ठीक हो जाएगा। अगर आपने कॉटन में स्टेराइल उसको प्रेस करके रखा और जब हटाया ऊज आउट हो ही जा रहा है, तो मतलब इज नॉट अ गुड केस फॉर डायरेक्ट पल्प कैपिंग, गो प्रोसीड विद पल्पोटमी। ठीक है, एक छोटा सा क्राइटेरिया विच आई एम टेलिंग, क्लिनिकल क्राइटेरिया कि पिन पॉइंट एक्सपोजर वो यूज हो रहा है तो मतलब वो इन्फ्लेम्ड है गाइस, रिमेंबर कंप्लीट पल्प। अगर पिन पॉइंट एक्सपोजर हो यूज नहीं हो रहा तो यू कैन प्रोसीड पल्प कैपिंग प्रोसीजर। तो डायरेक्ट पल्प कैपिंग routinely the same materials are there, calcium hydroxide, some people use zinc oxide, cement also, dentinal adhesive bonding agents, most commonly calcium hydroxide। तो फास्ट सेटिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करके we can do it, but remember the criteria which I am telling, the bleeding should not be fuse। okay, so very in a very simple words, now we are clear enough when to do direct pulp capping, when to do indirect pulp capping, and now as I have introduced a small area, अगर पल्पल एक्सपोजर हो और प्रोफ्यूजली ब्लीड हो रहा है तो आपको पता है कि इनको सिम्टम्स नहीं है तो पल्प तो वाइटल है कहीं ना कहीं, तो रिमूव द कोरोनल। तो बच्चों में हम पार्शियल पल्पोटमी नहीं करेंगे, बड़ों में यंग मैच्योर एडल्ट टीथ एपेक्स फॉर्मेशन नहीं हुआ है और पल्प है, तो उसमें जब आप पार्शियल पल्पोटमी करोगे तो सक्सेस रेट अच्छा है। बच्चों में रिस्पॉन्स, बच्चों में यू जस्ट रिमूव द कंप्लीट पल्प, वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे रिमूव करना है, आई यू नाउ, इफ वी रिमूव द पल्प completely, that is complete removal of the pulp which is known as pulpotomy। so how you will do, the technique is very simple, use a round burr। जब चैम्बर में एंटर करोगे स्पीड ऑफ द बर की स्लो कर लो, डी-रूफ करो जैसे एक ऐसे में करते हो, रिमूव द कंप्लीट पल्प टिश्यू इन द चैम्बर, remove the complete pulp tissue in the chamber with your slow speed round burr और sharp spoon excavate, very simple। ठीक है, ये एक बेसिक टेक्निक है आपकी पल्पोटमी में। उसके बाद lot of medicaments are there, but most accepted or most commonly used is are formocosol, especially Buckley's formocosol, जो कि एक लो कंसंट्रेशन formocosol 20%। ठीक है,
कॉटन चैम्बर पे रख सकते हो for 3 to 5 minutes and the pulp will be seen as dark and then you can follow with a good Zetanoy followed by a GAC or composite, or you can directly fill a GAC and then composite and give a stainless down. So I'll be discussing this technique again, don't worry. तो मेरे हिसाब से IPC DPC क्लियर हो गया. Now move on to the rationale and other theory behind pulpotomy, why it is successful and why we should go towards pulpotomy in primary teeth. Okay, most widely expected, yeah, we know because in our pediatric department also a lot of pulpotomy are done. तो ये बच्चों में बहुत वाइड ट्रीटमेंट है एंड आई थिंक वी शुड डू इट इन अ रूटीन प्रैक्टिस. बिकॉज अगर पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, पल्पल एक्सपोजर और ऊज आउट हो रहा है, रिमूव द कंप्लीट पल्प, सिंपल. ठीक है, क्या है, बिकॉज द हीलिंग ऑफ रेडिकल पल्प टिश्यू. तो बच्चों में क्या है, कैपेसिटी ऑफ रेडिकल पल्प टिश्यू इज वेरी हाई. तो फंडा क्या है कि हम ये मानते हैं जब वो पल्प एक्सपोज हुआ, ऊज आउट हो रहा था, तो कोर्नल पल्प है वो ज्यादा है. जब कोर्नल पल्प इन्फ्लेम्ड है तो कोर्नल पल्प को हटाओ, जो आपका रेडिकल पल्प है उसके पार आप फार्माकोसोल का मेडिकेमेंट रखो, वो पल्प फिक्स हो जाएगा. वो फिक्स कोर्नल पल्प में डिफरेंट डिफरेंट जोन्स बनेंगे, बट हाँ, द अपाइकल मेडिकल थर्ड विल बी वाइटल. सो because it is very commonly used procedure, a lot of materials have been used, from alcohol to glutaldehyde to ferric sulfate to calcium hydroxide. Calcium hydroxide is more preferred adults in immature young permanent tooth. You remember we compared about calcium hydroxide MTA के बारे में हमने डिफरेंस भी माना था. calcium hydroxide वन टाइम प्रोसीजर है, MTA टू स्टेप प्रोसीजर है. तो we should prefer calcium hydroxide in young permanent teeth. So you could rewind that. So now today discussing on the primary teeth. तो आज अपना फोकस प्राइमरी टीथ पे है. तो प्राइमरी टीथ पे जैसे मैंने बोला, lot of materials are there, you can use anyone if you want. Those who have electrocautery, I have, so I can use that also. And fascinating, those who have laser, they can also use. इलेक्ट्रोकॉटरी और लेजर का ये फायदा है, दे एक्ट वेरी, ब्लीडिंग भी स्टॉप करते हैं, स्टेराइल बनाते हैं. तो these newer techniques have been very successful. And also like sodium hypochlorite, a lot of people dentistry in which pulpal exposure is there, वहां वो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड से उसको वॉश कर देते हैं and then they do a restorative procedure. तो they भी नहीं, ये भी काफी people practice, but हाँ, routinely pediatric patients prefer Formagrisol only, easily available. And if you have MTA, good enough. MTA also gives a good result, 94 to 100%. मतलब pulpotomy के success rate फंडा ये है. Technique, as I told you, with this radiograph, I'll tell you, you can see the caries is very much close and approaching to the pulp. Caries हटाया, pulpal exposure हुआ, ooze out हुआ. Okay, ooze out हुआ. जब वो ooze out हुआ तो आपने पूरा कोर्नल पल्प स्लो स्पीड राउंड बर्स्ट से और स्पून एक्सकेवेटर से हटाया, और जो विजिबल थे वहां आपने फॉर्माकोसोल दिया. And guys, important, if you are planning for a pulp procedure, you have to give anesthesia, local anesthesia देने का है, पहले ही देने का है, because patient will have, अभी तक जो हमने पल्प कैपिंग और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ा था, उसमें एनेस्थीसिया यूजुअली जरूरत नहीं पड़ता है. तो इसमें एनेस्थीसिया देने के बाद द टेक्निक एज सेड, स्लो स्पीड राउंड बर्स्ट, स्पून एक्सकेवेटर यूज करा, ब्लीडिंग कंट्रोल किया, और जब ब्लीडिंग कंट्रोल हुआ, बकलीज फॉर्मोक्रोसॉल, दैट इज अ लो कंसेंट्रेशन 20% जो हमें अवेलेबल होता है, उसको 3 to 5 मिनट तक हमने चैम्बर पे रख दिया. दैट्स इट. उसके बाद यू कैन गो विद अ रिस्टोरेटिव, एंड फ्यू पीपल फॉलो
two-step protocol of pulpotomy in which they keep a formocresol cotton for 24 to 48 hours, then they do a permanent material. तो सबका अपना अपना protocol, but 3 to 5 minutes का भी is good enough. The success rates are good, and if you have MTA and the kid is very young and you want long-term success, you can go with MTA. बट एमटी यही है, वो भी टू स्टेप हो जाएगा क्योंकि एमटी को हार्ड यू नीड टू कीप अ मॉइस्ट कॉटन एंड नेक्स्ट डे यू हैव टू रिकॉल, देन यू हैव टू डू अ गुड परमानेंट रिस्टोर. अदरवाइज यू जस्ट पुट अ फॉर्मोक्रेसोल फॉलोड बाय 3 से 5 मिनट्स के बाद यू पुट अ बेस लाइन ऑफ ज़ेटेनोई. बेसिक टेक्निक बता रहा हूं मैं. फॉलो जीआईसी एंड देन इफ इट इज अ लार्ज you can give a stainless steel crown also. So now we discussed vital pulp therapy in pediatric patients which आराम से practice in a routine clinical practice following the small things which I have told you of direct pulp capping, indirect pulp capping and pulpotomy. So now vital pulp therapies are done. We'll focus on non-vital pulp therapies. अब कोई पेशेंट आता है, उसको पेन हुआ और नाइट में ही पेन हुआ, कोल्ड बहुत सेंसिटिविटी रहा, द किड कुड नॉट स्लीप और दे हैड टू टेक मेडिसिन. नाउ फॉर एग्जांपल सिमिलर दिस सिम्पटम्स, यू हैव टू डू कंप्लीट रिमूवल ऑफ द पल्प. ओके, you have to do complete removal of the pulp because patients के symptoms हैं, or you see a pathology, then also you have to do complete removal of the pulp. Okay, so in that scenario we need to go with pulpectomy procedure. So pulpectomy procedure simplify, I'll explain you with newer files which have come, which you can use, and you can do the biomechanical preparation faster. Okay, and I'll be telling you with the concentration of hybrid which you can use in pediatric patients for good dissection, and why, lastly, why any of the pulp therapies we do in our pediatric patient is usually a partial pulpectomy procedure. That I'll be telling you. So today we just had a start of our of pediatric endodontics with vital pulp therapies. Tomorrow we'll go with non-vital pulp therapy, basically pulpectomy, and if possible steel crowns के बारे में एक brief introduction because it's easy. You just need to have few sets of stainless steel crowns you get in the patient's mouth, which are long lasting. And then as the कमेंट बॉक्स आई सॉ कि हाँ अगर मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा ग्लिम्स मिल जाए तो या आई डू इट इन द लास्ट. सो टिल नाउ आई थिंक आई कैन एंड अप द सेशन and continue tomorrow most probably at this time. See you all. Will come with greater, more advanced and temporary pediatric endodontics to go in doing pulpectomy procedures. So till then, bye bye, take care, and if any doubt there, you can just comment. And if you feel it was a little helpful, you guys can please share. That's it. Dr. Nitin Shishodia signing off. We'll see you tomorrow or later soon with the others. Till that, bye bye, good night, take care.